Assalamu alaikum, and the topic that I'm going to discuss in this video is feminism. So, feminism is basically an interdisciplinary sort of topic. It is incorporated in the course of gender studies as well as in literary theory and in women's studies and political science as well. However, if we define feminism, then feminism is basically an ideology or approach that men and women are equal. It has always been a debate from a very long time that whether men and women could be equal. And it is believed that women are oppressed and subjugated at the hands of patriarchy, and the efforts must be done in order to uplift their status. That is why feminism movement was launched, and the term feminism was basically coined by Charles Fourier in 19th century. Okay, so basically, feminism is an approach that believes that men and women are equal, so that there should be no discrimination between them on the basis of gender, and they should have equal access to different opportunities, like they should have equal access to health, employment, and resources. Uh, those resources could be in any sector, ranging from health, education, right to vote, in political participation in different spheres. However, if we define that, when do we call a person a feminist? So, feminist is a person who has a belief that women are subjugated and exploited at the hands of men or by any other mean, and that person must take actions to uplift the status of women in one way or other. So, uh, in the past times, जो फेमस राइटर्स थे उस एज के because females were not allowed to write, they were not allowed to publish their writings, and they even didn't have the access to attain education. तो क्या था कि जो पास्ट में राइटर्स थे, फेमस राइटर्स और पोएट्स, they used to publish their writings and they were basically ruling the sphere of literature. तो उसमें क्या होता था कि दे यूज्ड टू गिव वेरी मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स, और क्योंकि पेट्रियार्की ही एग्जिस्ट कर रही थी, और तो मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स शो करते थे जिससे फीमेल्स काफी ट्रिगर होती थी, दैट दे यूज टू कंसिडर वेमेन एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन. तो जिस तरह प्लेटो इतने पॉपुलर राइटर एंड फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा दैट Plato thanks the god for two blessings, that he had not been born a slave and that he had not been born a woman. So this is quite a misogynistic remark that he said. He means to say that being slave and being woman is equal to each other. Moreover, शेक्सपियर ने तो frailty को directly associate कर दिया woman से. So this is also an epitome of misogyny. Moreover, Mary Wollstonecraft जो थी, she basically initiated the feminist movement, जिसको हम further अभी discuss भी करेंगे. However, जो होरेस ने कहा कि that Mary Wollstonecraft is a hyena in petticoats. So it is very disgraceful remark by him. So by these arguments or by these quotations, we understand that there had been misogyny in that period, और उससे females काफी trigger भी होती थी, because बाद में जो भी feminism movement launch हुई, वो उसी का reaction है. So further, अगर हम जब फेमिनिस्ट राइटर्स की तरफ मूव करें, तो सबसे पहले तो मैरी वॉल्स्टन क्राफ्ट हैं, जिन्होंने एक बुक लिखी थी टाइटल्ड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन. उसके ये बुक जो है ना, बेसिकली उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ में जो वुमेन के राइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया, दैट women should be given right of education. उस पहले जो है ना, पास्ट टाइम्स के अंदर सिर्फ मेल्स को एक्सेस थी जो एजुकेशन से, because there were schools for
ओनली बॉयज एजुकेशन, फीमेल्स के लिए या तो प्राइवेट ट्यूटर हायर करना पड़ता था, और वो जो लोग वेल ऑफ नहीं थे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो फीमेल्स को फिर एजुकेट नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से फीमेल्स को एक्सेस नहीं थी एजुकेशन से। तो जो मैरी वॉल्सन क्राफ्ट हैं, उन्होंने एडवोकेट किया दैट women must have an access to education. There should be schools for their education. Moreover, they should be given more autonomy in terms of marriage. They should have a choice of marriage. Moreover, they should be given financial freedom, and they should have a right to participate in political affairs, like right to vote, right to participate in the politics as representative, to be part of the government as well। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन है वो है वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने एक ऐसे लिखा टाइटल्ड अ रूम ऑफ वंस ओन। अच्छा, उसके अंदर वो बेसिकली वुमेन का एक तो राइट, बेसिकली राइट टू देयर राइट टू पब्लिश देयर राइटिंग्स, इस चीज़ को एडवोकेट किया उन्होंने। और वन वे और अदर इसमें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात की, जिससे जो हमें इस कोटेशन से ही आइडिया हो जाता है दैट अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। बेसिकली उन्होंने ये एडवोकेट किया दैट if women would be having financial freedom, only then she would be able to write fiction। जैसे कि अगर हम fiction के थ्रू वो बेसिकली ऑन द होल बात कर रही हैं कि अगर women के पास इस चीज़ का फ्रीडम होगा कि वो फाइनेंशियली जो है ना फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो ही वो जो है ना राइट कर पाएंगी। तो और एजुकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है वेमेन के लिए। मोर ओवर, इस वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस ऐसे के अंदर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया दैट शेक्सपियर और शेक्सपियर सिस्टर के दरमियान में, कि शेक्सपियर इतने अच्छे और इतने बड़े प्ले राइट हैं पास्ट में, शेक्सपियरियन टाइम में प्ले राइट हैं, पोएट हैं। तो शेक्सपियरियन जो शेक्सपियर सिस्टर हैं, वो भी तो उतनी ही अच्छी राइटर हो सकती हैं, क्योंकि मे बी इट्स इन जीन्स। तो खैर उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि बिकॉज शेक्सपियर सिस्टर डिडंट हैव राइट of education and she didn't have economic freedom, that's why she could not produce her literary work, जिसकी वजह से जो है ना हम इतनी लेजेंडरी और इतनी अच्छी राइटिंग से महरूम हो गए। सो शी टॉक्ड एंड एडवोकेट अबाउट द राइट्स ऑफ women in terms of education and economic freedom in her essay A Room of One's Own। Now moving towards Kate Millett। केट मिलेट ने बुक लिखी थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की दैट जब आप पैदा होते हो तो यू आर मेल एंड फीमेल बायोलॉजिकली। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर बीइंग associated with different characteristics, you are associated with different stereotypical things that are associated with a certain gender। तो आपकी जो ideological characteristics हैं being a male and female, तो उसको उसने challenge किया है that a male person, a biological male person could be feminine as well, and a female who is born biologically female could show masculine traits as well। So उन्होंने ideological characteristics जो थी उनको challenge किया। Moving towards Simon de Beauvoir, इन्होंने एक बुक लिखी द सेकंड सेक्स के नेम से, और उसके अंदर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ अदरिंग। Obviously when you are a man and you are writing something, then women becomes an other person to you। It means that you are going to tell about your own perspectives and you are going to forget about what the other person is, or maybe you are going to talk back at the person or the community who is on the side of others, who are considered others। So she basically talked that women becomes an other subject in the previous writings। तो और फर्दर उन्होंने अपनी उसी बुक के अंदर ये डिस्कस किया दैट one is not born but rather becomes a woman। वो कैसे कि with the passage of time different ideological characteristics, different stereotypical thinkings associate होती चली जाती हैं, and then she becomes a woman।
Now moving towards Elaine Showalter, she was a feminist writer as well और इन्होंने अपनी बुक के अंदर एक बुक लिखी In a Literature of Their Own, British Women Novelists from Bronte to Lessings. और बेसिकली इसके अंदर उन्होंने ना थ्री फेजेस के बारे में डिस्कस किया that women first underwent through feminine phase. फेमिनिन फेज के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी बेसिकली कि उन्होंने मेल स्यूडोनिम्स के साथ अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करवाया जैसे कि जॉर्ज इलियट हैं हमारे पास जॉर्ज सैंड हैं they were female writers but they were not allowed to publish their writings with their own names so they used a pseudonym in order to get their writings published so basically उन्होंने जो सोसाइटी में at that time norms exist कर रहे थे that female cannot publish their writings उसको एक्सेप्ट करते हुए मेल pseudonyms के साथ अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करवाया देन सेकंड फेज है फेमिनिस्ट फेज फेमिनिस्ट फेज के अंदर उन्होंने क्या किया कि फीमेल नॉवेलिस्ट थी जो उन्होंने या फीमेल राइटर्स थी उन्होंने बेसिकली अपनी राइटिंग्स के अंदर प्लाइट ऑफ फीमेल दिखाना स्टार्ट किया दैट हाउ females are suppressed at the hands of patriarchy or other factors because of the stereotypical thinkings that are associated with being female तो ये feminist phase था अब जो female phase आया and which was the third phase उसके अंदर क्या किया कि उन्होंने मिसोजिनी को अनकवर किया बेसिकली डायरेक्टली चैलेंज किया मिसोजिनी को by raising voice for that very reason that females are subjugated and their status must be uplifted and that women and men are equal basically directly patriarchy को confront किया उन्होंने देन उन्होंने गायनो इलाइन शवाल्टर ने एक गायनो क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गायनो क्रिटिसिज्म के उन्होंने बेसिकली ये कहा दैट जो मेल राइटर्स थे पास्ट में वो वन वे और अदर डायरेक्टली वो जो है ना फीमेल राइटर्स को अपनी एक जो लिटरेरी ग्रुप था या एक लिटरेरी एसोसिएशन थी पास्ट में उससे दूर रखा उन्होंने वो इलाइन वॉल्टर ये बिलीव करती हैं और ये चीज़ असर्ट करती हैं दैट उन्होंने जानबूझ के इंटेंशनली फीमेल राइटर्स को उस लिटरेरी कैनन से दूर रखा तो जिसकी वजह से इलाइन शवाल्टर कहती हैं दैट gynocriticism must be established this is going to be a separate course जिसके अंदर फीमेल की राइटिंग को सेपरेटली जज किया जाए कैसे उन्होंने एक gynocriticism का मॉडल जो है बेसिकली प्रेजेंट किया दैट women's writing should be judged on the basis of four parameters जिसके अंदर biological parameter है जिसके अंदर they should be judged बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर बेसिकली वो ये चीज जज की जाएगी दैट हाउ फीमेल बॉडी मार्क्स इटसेल्फ इन राइटिंग्स सेकेंडली लिंग्विस्टिक मॉडल के अंदर ये चीज डिटरमिन की जाएगी दैट हाउ मेंस लैंग्वेज एंड women's language are different from each other and how the discourse is formulated and how come they are different from each other then psychological model के अंदर ये चीज जज की जाएगी दैट what is the psyche of female and how the female's psyche is being portrayed in the writings और कल्चरल पैरामीटर के अंदर ये चीज डिस्कस की जाएगी दैट हाउ कल्चर एंड द stereotypical thinking that exists in the society shapes the goals of women and how they confront those goals so gynocriticism ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फर्दर फोर पैरामीटर्स थे उन चीज़ों की बेसिस पे फीमेल्स की राइटिंग्स को जज किया जाएगा सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो थैंक यू सो मच